In the name of Allah, the Rahman and the Rahim, who taught man by means of the pen. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. Welcome you all in today's lecture. Topic for today's lecture discussion is key elements of non-verbal communication. Dear students, it's the continuation of the same topic, which is effective presentation skills. We have covered some of the key components of that very topic. So let's study in detail. The key components are key elements of non-verbal communication. Dear students, we know that non-verbal communication is a form of communication in which we are not using words, okay? We are conveying our ideas, thoughts, meanings, messages to others, to the audience, to the participants with the help of postures, gestures, signs, charts, maps, and so on. So, in today's lecture, we will be covering these things: open body postures, eye contact, facial expressions, gestures, postures, and space. Dear students, as we know that body language plays a vital important role in effective presentation skills. So now, what's meant by body language or body movement? So, we know that for the understanding of body language, we need to understand that how we can stand in front of our audience, inside the class, or during lecture, okay? So, it is stated that stand firmly and move deliberately. Yes, it's one of the techniques that how to stand in front of the audience, in front of the listeners, okay, in front of those people who are listening you, who are your participants. So stand firmly and move deliberately, okay? Your movement will be deliberate, intentional movement. आप मतलब इरादतन एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है? Don't sway or shift. Sway means that to move slowly from one side to another or from one point to another point, okay? जिस तरह की आप हेजिटेशन फील करते हैं ना, आप एंजाइटी फील करते हैं, सो आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए. सो डोंट डू दिस, ओके? Move at appropriate times during presentation. For example, move during transitions or to emphasize a point. Yes, it's another important technique. Dear students, it is saying that move at appropriate times. मौजू वक्त पे आप क्या हो जाए, आप मूव करें, ठीक है? आप हरकत करें प्रेजेंटेशन के दौरान. फॉर एग्जाम्पल, कब आप मूव कर सकते हैं? जब ट्रांजिशन, फॉर एग्जाम्पल आप एक टॉपिक से, एक आइडिया से दूसरी आइडिया की तरफ जाते हैं, ठीक है? एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट में आप ट्रांजिशन ले आते हैं, ठीक है? सो उस वक्त आप क्या हो जाए, आप मूव करें, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आप कम्युनिकेशन के पर्पसेस बता रहे हैं किसी को, सो आप एक बताएं फिर आप मूव करें, दूसरा बताएं फिर आप मूव करें, जो बुलेट्स में आपने ले आए हैं, ठीक है? आर टू एम्फसाइज अ पॉइंट. यस, जब आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जोर देना चाहते हैं, स्ट्रेस देना चाहते हैं, तो फिर आप क्या करें, मूव करें. यस, स्टैंड वेयर यू कैन सी एवरीवन. यस, ऐसी जगह पर आप खड़े हो जाएं, ठीक है? ऐसा मूवमेंट आप करें कि सबको आप दिखाई दे. बिकॉज they will be having eye contact with you. They will be looking at you during lecture. While delivering a lecture, you should stand where you can see everyone. Don't block the visual screen. Yes, don't come there in front of the screen. Yes, so don't block the visual screen. Now hands, we are giving movement to our hands. Decide on a resting position for hands. Should feel and look comfortable. Yes, आप रिलैक्स दिखाई दे, ठीक है? ऐसा लगे कि आप रिलैक्स हैं, आप कंफर्टेबल हैं, यू आर फीलिंग वेल. Gesture should be natural and follow what you are seeing. Yes, dear students, sometimes it happens कि हम कहते तो कुछ और हैं, लेकिन इशारे जो हम करते हैं वो हम उस मिसमैच होता है, ठीक है? what we are saying and how we are gesturing or how we are giving movement to our hands.
So there should be harmony between your seeing and your gestures and postures, okay? Hands movements. Gestures should be natural and follow what you are seeing. ज़्यादा भी ना हो कि फ्रीक्वेंसी ठीक हो, ठीक है, रेशो कि आपकी जस्चर बहुत ज़्यादा हो, यस, और रफ्तार भी बहुत ज़्यादा हो. कुछ लोग बहुत ज़्यादा जस्चर्स, मतलब एट द सेम टाइम दे आर सीइंग थिंग्स, बट वो जस्चर बहुत ज़्यादा करते हैं. इट आल्सो लाइक develop disinterest among the participants. Hand movement can emphasize your point, yes. Make gesture strong and crisp. Okay to use both arms and hands. Keep hands away from face, yes. Another important point, dear students. जिस तरह की कुछ लोग होते हैं ना, वो अपने फेस के साथ खेलते हैं, वो हाथ क्या करते हैं, फेस पर रखते हैं. So don't do this. Like keep hands away from face. When pointing to the screen, do so deliberately, don't wave. Yes, use 3 T's method. Like 3 T's means touch, yes, first touch, that very point, turn and talk. Explain. Touch, talk, touch, turn and talk, okay? Like we have eyes. Also, eyes is like one of the important components of the body language. Eyes contact is very important. Look at audience faces, don't above their heads. Yes, sometimes we are not looking at the faces of our audience. Okay, we feel shyness, we feel anxiety, we have fear, we can't face them. So that's why we are not looking. We are sometimes looking like at their legs, yes, sometimes at our own legs, or sometimes on their heads, okay, above their heads. So don't do this. Yes, look at audience's faces, don't above their heads. If in interview or business meeting, look at the decision makers as well as everyone else. Vary where and who you look at. Yes, dear students, don't do this. Like look at faces for 3 to 5 seconds and then move on to the next person. एक जगह पर एक मतलब पार्टिसिपेंट पर आप फोकस ना करें, बार बार उनको ना देखें और ज़्यादा भी ना देखें एक को, ठीक है? लाइक 3 to 5 सेकंड जस्ट आप उनको देखें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह आप गो ऑन हो जाए, ठीक है? डोंट लुक अवे फ्रॉम ऑडियंस फॉर मोर देन 10 seconds. लुक एट अ पर्सन कीप्स देम एंगेज. यस, ये बहुत मतलब इफेक्टिव स्किल है कि आप जिसको देखते हैं ना, आप उसको एंगेज रख सकते हैं. जिसके साथ आप आई कंटेक्ट करते हैं, ठीक है, वो आपके उसमें आ जाता है, फोकस, यस, ड्यू अटेंशन के साथ आपको देखता है, ठीक है. यू कैन टेक अटेंशन of your participants, of your audience, while looking at their faces. Yes. Looking at अब advantages क्या है? Looking at their faces tells you how your delivery and topic is being received by the audience. Yes. आप मतलब ये क्लियर कर सकते हैं कि जो कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ या बोल रहा हूँ, yes, my audience, they are picking me. Okay? जब आप उनको उनके चेहरों पर से देखते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि यस, माई ऑडियंस, दे आर विद मी, दे आर लिसनिंग टू मी, व्हाट आई एम सीइंग. ओके, दे आर लाइक गेनिंग समथिंग, दे आर गेटिंग समथिंग. सो दिस इट इज द एडवांटेज ऑफ आई कंटेक्ट. Now read audience. Yes, how we can read our audience faces. Keep them interested. Yes. So how we can? Audience body language shows. Yes. ऑडियंस की बॉडी लैंग्वेज से लाइक आई कंटेक्ट किया है, आईज कंटेक्ट किया है, एक बॉडी लैंग्वेज का पार्ट है ना, बॉडी लैंग्वेज है ना. सो आई से देयर फेसेस, उनकी फेसेस से, उनकी हैंड से, उनकी मतलब जो जिस तरीके से वो हमें देख रहे हैं, सो वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन रीड, ओके, ऑडियंस, देयर ओपिनियंस, देयर फैक्ट्स. अच्छा,
अभी हमें पता चल सकता है कि दे आर इंटरेस्टेड, दे आर बोर, दे आर ओपन, दे आर हॉस्टाइल, और दे आर डिसअप्रूवल when they are having opposing like points regarding the topic, so you can see at their faces. Now verbal delivery, again we are making like these are some of the faults, major faults, okay, common faults of 5 critical elements of verbal presentation. Like volume is very important, speaking too quietly, again we have speed of speaking, speak too quickly hinders the audience comprehension. Yes, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आप जब बोलते हैं ना तो इट लाइक हिंडर्स द ऑडियंस कंप्रहेंशन, उनके अंडरस्टैंडिंग में क्या है, रुकावट है ये. अब बहुत कुछ लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी बोल लेते हैं. नो, इट्स नॉट मतलब अ गुड presentation skill. So please speak at like certain volume or like control your speed. Variety is very important. Monotone, ठीक है. यस, मोनोटोन का मतलब है कि एक टोन से जब आप लगे हो ना, सेम टोन से. यस, कभी आप स्ट्रेस नहीं ले आते, कभी आप वॉल्यूम को बढ़ाते नहीं है, कभी आप स्पीड अप नहीं हो जाते. इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, इम्पॉर्टेंट लाइक पॉइंट पर आप क्या करते हैं, आप ज़्यादा फोकस नहीं करते. सो दिस इज कॉल्ड मोनोटोन. लेक ऑफ एक्सप्रेशन कैन क्रिएट डलनेस, मंडेन, ओके. डिलीवरी विद लिटिल animation. Yes, so these all things hinder the audience attention. Fillers like hesitations, excessive pauses, using distracting, yes, distracting fillers like oh yes, we can like, yes, so yes, so these are what, these are like fillers, okay. Don't like say things in this way. Emphasis, yes, stress on unimportant words clouds meanings. Yes, जब आप unimportant words पर stress देते हैं, it also hinders the audience attention. Poor phrasing, put pauses in wrong places. Yes, जब आप क्या करते हैं, कामा डालते हैं wrong places पर. सो कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना, मतलब जब आप एक बात को कंप्लीट करते हैं, कुछ हद तक कंप्लीट देने दें. लाइक हाउ वी कैन इम्प्रूव, लाइक टिप्स फॉर स्पीकिंग टू एन ऑडियंस. यूज स्पोकन रादर देन रिटन लैंग्वेज. यस, स्पोकन लैंग्वेज से आप काम करें. लाइक ब्रोकन सेंटेंसेस, जो कट फ्रेजेस होते हैं ना, कट फ्रेजेस. यस, जो न्यूज़पेपर वाले फ्रेजेस होते हैं ना, जो जिसको हम सुर्खियाँ बोलते हैं. सो यूज दीज थिंग्स, कट फ्रेजेस. यूज एक्टिव रादर देन पैसिव वर्ब्स. लाइक पैसिवाइजेशन आप ना करें, एक्टिव सेंटेंसेस आप बोले. अवॉइड टेक्निकल टर्म्स. यस, अवॉइड टेक्निकल टर्म्स अनलेस यू नो दैट द ऑडियंस इज फेमिलियर विद. यस, टेक्निकल टर्म्स आप ज़्यादा यूज़ ना करें, शायद कि आपकी ऑडियंस वो क्या हो, अनफेमिलियर हो विद दीज टेक्निकल वर्ड्स. सो प्लीज़ यूज़ ऑलवेज योर ओन वर्ड्स, phrases and sentences. Yes, cut out jargon जो स्पेशल वर्ड्स होते हैं ना, वो मतलब स्पेशल पीपल बोल सकते हैं, पार्टिकुलर पीपल्स, दे नो द मीनिंग्स. लाइक एक्सपर्ट इन पार्टिकुलर फील्ड, दे कैन अंडरस्टैंड jargons. Like the language of doctor, okay, the language of doctor is understood by the another doctor, we can't understand. Or the language of the educate, वकील का language आप नहीं, उनका स्पेशल jargon है, ठीक है, इंजीनियर का स्पेशल jargon है. So if like we are delivering to like variety of people, बहुत सारे फील्ड से लोग हैं, तो हमें चाहिए कि हम टेक्निकल टर्म्स को क्या करें, अवॉइड करें. A myth about giving presentation. Good speakers are born, not made. No, good speakers take more time. ये fact है कि good speakers they are taking more time while preparing and practicing than ineffective speakers. If I follow what someone else says and does, I will be as effective as that. No, इस तरह नहीं हो सकता. Other people's styles are useful, but you must present in the way that feels most comfortable for you. People who speak and look confident are not nerves inside. Most speakers
experiences some type of nervous energy. So dear students, read these things. Yes, another important point, dear students, tips for reducing anxiety. Anxiety मतलब खौफ, डर, ठीक है, फेयर को कहते हैं. स्पेशल टाइप ऑफ फोबिया यू वी कैन से, कि हम जब इन फ्रंट ऑफ पीपल आते हैं, लोगों के सामने हो जाते हैं, तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते. हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं एंजाइटी को? ऑर्गेनाइज. फर्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. नोविंग दैट योर प्रेजेंटेशन इन थॉट्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड विल गिव यू कॉन्फिडेंस. यस, जब आपको इस तरह मतलब मालूम होना कि मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो ऑर्गेनाइज है, मैंने फुली तैयार किया है, सो इट विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. आपका रिड्यूस हो जाएगा क्या? एंजाइटी. विजुअलाइज. Imagine delivering your presentation with enthusiasm and leaving the room knowing that you did a good job. Yes, आप अपने आप को क्या करें? enthusiastic शो करें. Yes, विजुअलाइज करें इस तरह कि आप क्या कर रहे हैं, आप जो टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं आप ठीक तरह जा रहे हैं. यू आर नॉट कमिटिंग मिस्टेक्स. प्रैक्टिस. यस, ऑल सक्सेसफुल स्पीकर रिहर्स देयर प्रेजेंटेशन. यस, रिहर्सल आप करें. बिफोर मतलब एक्चुअल प्रेजेंटेशन आप ट्वाइस थ्राइस क्या करें, प्रेजेंटेशन को रिपीट करते जाएं, ठीक है, ताकि आप अच्छी तरह तैयार हों. आइदर डू इट अलोन विद योर टीम और वीडियो टेप योरसेल्फ एंड रिव्यू योर परफॉर्मेंस आफ्टर. यस, आप किसी दूसरे कलीग के साथ, फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ शेयर करें, या आप क्या करें, रिकॉर्डिंग करें अपने आप से, या वीडियो टेप ले लें. सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट, और प्रैक्टिस मेक्स योर प्रेजेंटेशन वेरी इफेक्टिव, इंफॉर्मेटिव एंड वेरी ब्यूटिफुल, नेचुरल. Practice standing up as if the audience was in front of you, then practice again. ऐसा आप कंसिडर करें कि मेरा क्या है, वो जो ऑडियंस है वो मेरे सामने है और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ. यस, अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स विच इज़ लाइक ब्रीथ. ओके, सॉरी, रिलीज योर टेंशन. यस, टेंशन को ख़त्म करें. ब्रीथ. Inhale deeply several times to stay loose. When your muscles tighten, you feel nervous and it's difficult to breathe. Try to clear your mind. Breathe and tell yourself to relax. Yes, आप अपने आप को क्या करें, रिलैक्स करें, ठीक है. आप ब्रीथ ले लें, डीप ब्रीथ ले लें, सांस ले लें, ठीक है. While before starting your presentation, release tension. मूव. यस, कॉन्टेक्ट, आई कॉन्टेक्ट बनाए पहले से आप. ड्रेस अप्रोप्रिएटली इज वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशन, ठीक है. सो डियर स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड स्टेप्स of effective communication skills, and we have also discussed some of the other points, non-verbal communication key elements. If you have any question, you can ask in comments. Thanks for watching. Assalamu alaikum.